humans should colonize outer space, and the against team should say that humans should not colonize outer space. Okay. So now I would like to invite the members for the members from the for team first to give the introductory points. So okay, someone is getting a call. Shubham, you're getting a call. You're in the against team, so you can talk later. First, I would like Bhargavda to please give your introductory point. And thank you, moderator. Good evening, all. So, today I'm speaking for the motion that humans should colonize outer space. So, first of all, why should humans colonize outer space? Is the main reason is to save us from extinction. We know what happened with dinosaurs. We know what happened with other species also like dodo bird and all. So the same fate does not happen with us. So that's why we should means colonize outer space so that we can spread our population and save our species. Thank you. Thank you, Bhargav. So now I would like Shubham. Is he back? Is Shubham back? I guess not. So I would like Mahfouz to please give your introductory point. Uh, so, see, uh, Mahfouz? Mahfouz, you're not breaking, okay? I can hear the background noise. Maybe he wants to speak in SMS. Yes, you can speak in Assamese or Hindi, in any language you want. I think you are having problem with headphone. You can remove that. Actually, he's not having problem. Members, please speak up. You may remove the headphone if you're using it. Your voice is being real right now. Mahfouz, we can hear your background noise. am I audible, guys? Yes, you're audible. Okay, finally. Yeah, it was my headphone issue. Sorry. Okay. Please go So ahead I with will. your introductory point. Is from the back. I guess Shubhamda is back. Let him start first. Okay, I'll go back to you. Shubham, will you please start with your introductory point? Am I audible? Yes, you're audible. Am I taking part in, is it for or against? You're against. That is, Against, no? you should Okay. say, Eh, yeah, okay. Can you give me 1 minute? I'd like to think my some points. So, Okay, then we'll go back to the for team, then we'll collectively ask the opinion of the against team. Okay, next. So in the for team, we have Srijan. So please give your introductory point. Am I audible? Yes. Okay. So, good evening, everyone. Myself, Srijan Sama, and today I'm speaking for the motion that yes, human beings should colonize outer space. That is the motion, right? Yes, it is the motion. Uh, okay. Yes, human beings should colonize outer space. The reason I can think of is firstly, it will promote brotherhood among nations because this will require a collective endeavor from all the countries, space exploration and space colonization. And since we are searching for new rare earth elements for development of some technological development, we can also when space exploration will flourish, this
Rare, we can find these rare elements in outer space, in Martian topography, or in any other planets in that case. So, I would like to conclude my introductory part. Thank you. Thank you, Srijan. So I would like now Shubham from the against team to please give your introductory point. My name is Shubham, and I'll try to discuss the against the motion for should human colonize the outer space. So I think they should not, like humans should not colonize the outer space because to exploit or to use the resources, no doubt there are many resources in the space, be it from the planet or even in asteroids. So to exploit them, you don't have to make a colony of it. And that is not necessary to do such thing. So yeah. Thank you, Shubham. So next I would invite Mehfooz to please give your introductory point. Okay. Hi everyone. So I'm Mahfouz Hussain, and I'll be saying against the motion. So I believe that this colonization will create some social inequality because there is a risk that space colonization will afford or will take only the economic or economically wealthy people, and will select the only those peoples and will not select the poor peoples. So in case if there is a real colonization, only the wealthy people will go out and the other people will remain inside. So that is all I want to say in the direction. Thank you, Mehfooz. So now for the counter round, I would invite Bhargav Da to give your counters. थैंक यू मॉडरेटर। सो पहले तो मैं शुभम क्या महफूज को काउंटर करना चाहता हूँ। उसने बोला कि सिर्फ जो रीच है उन लोग को मतलब चांस मिलेगा अगर आउट ऑफ स्पेस कॉलोनाइजेशन हुआ। तो पहली बात, हम लोग आर्ट में रह के भी आज तक सोशल इनइक्वालिटी हटा नहीं पाए। रीचे हो जाता रहता है, मतलब रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। सो ये बात कभी आर्ट में रह के भी चेंज नहीं होगा और बाहर में जाके भी चेंज नहीं होगा। हाँ, मानता हूँ कि पोलर को भी चांस देना चाहिए, बट पहले तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ये चीज़। अगर हम लोग को अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा या फिर हम लोग को अगर कुछ सोर्सेस मतलब जो इकोनॉमिक जो वेल बैकग्राउंड के हैं वो लोग अगर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है ये मिशन। और सेकेंडली शुभम ने जैसे बोला कि रिसोर्सेज के लिए मतलब कॉलोनी बनाने ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग के आर्ट के रिसोर्सेज जो है बहुत दिन ब दिन कमते जा रहे हैं। और लाइक जो हम लोग का पॉपुलेशन है वो बढ़ मतलब ऑब्वियसली इट इज़ इंक्रीजिंग। सो ऑब्वियसली बाहर जाके अगर कॉलोनी नहीं बनाएंगे तो हम लोग रिसोर्सेस कैसे लेंगे अगर सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग को नहीं पता उसका। पहली बात तो एक जगह से अगर रिसोर्सेस कलेक्ट करना है पहले तो उसका सराउंडिंग्स या फिर ह्यूमंस के लिए अच्छा है कि नहीं वो तो जानना पड़ेगा। अगर उसके अगर नहीं जान के हम लोग वो रिसोर्सेज अगर आर्ट में लेके आएंगे या फिर वो रिसोर्सेज हम लोग उधर से मतलब ट्राई टू मीन्स ब्रिंग आउट, सो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता क्योंकि हम लोग को सराउंडिंग्स के बारे में पता ही नहीं कि वो अच्छा है कि नहीं हम लोग के लिए। तो ऑब्वियसली कॉलोनी बनाना ज़रूरी है क्योंकि तभी पता चलेगा कि ह्यूमन सर्वाइवल उस रिसोर्सेज के साथ पॉसिबल है कि नहीं। थैंक यू। Thank you, Bhargav. So now I'll request Shubham to please give your counterpoints. So now I understand the concept the Bhargav might want to say, but but the main problem is to exploit the resources. You don't have to make a colony. And it is not necessary for a human to go to a hostile situation. Uh, uh, we have robots. We are developing robots. Robotic development is going very fast than human, and a human training is risky. Human training takes years and resources, and it is also not very popular because unless there is some space race, there will be avoidance for human uh, participation directly. One such example is after the moon landing, the human space program or moon at least was reduced drastically. So it is an indication that human involvement directly, it is not a necessary thing for progress. We can still use rovers and to extract
not really extract, but for to gather knowledge on Martian land or moon or any asteroid or space objects. And second of all, we have enough of space garbage. So if we start to send humans, it will be lethal for them as well. So that is my counter argument for now. Thank you, Shubham. So now I'd request Srijan to please give your counter arguments. My worthy opponent, Subham sir, said that the space colonization, when humans travel to outer space, it will cause risks to human lives. I would like to point out that many space explorations have taken place manned missions, and there are very less examples. Unfortunately, there are few examples. Yes, space mishaps have occurred, but there are very less examples. Many manned missions have gone, and I believe rather than causing risks to life, it will rather uh, increase employment. It will motivate students to opt for STEM, science, technology, engineering, and mathematics fields, and students who have already opted those fields, they will get employment opportunities. The achievements of astronauts and scientists push the boundaries of human knowledge and possibility, capturing the imagination of millions. So the, even now we see that many children dream to be astronauts. Astronauts, and because before we talk about colonization, research and development on space exploration is required. This research and development itself will enormously increase employment. So that is my argument for now. Thank you. Thank you, Srijan. So now I'd request Mehfooz to please give your counter arguments. Okay, so I would like to add a very small point, that is, I believe that this entire process will be a cost prohibitive. Okay, because this space colonization will require a massive investment in this infrastructure, technology development, and we're not sure that like the return on this investment is uncertain. Because like even in Earth, जब हम कुछ invest करते हैं कुछ colonization या फिर कुछ किसी में भी, तो उसका जो प्रोडक्ट या फिर आउटकम आता है उसमें हम अनश्योर रहते हैं। और ये तो फिर भी स्पेस की बात है, ये ऑलरेडी एक बहुत दूर की सोच है, ठीक है, तो वहां पर इतना पैसा लगाना, फिर एक कॉलोनाइजेशन बिल्ड करना, इसका क्या ये टोटली फ्रूटफुल होगा कि नहीं, हम पहले से श्योर नहीं है। सो आई बिलीव दैट इसमें इतना इन्वेस्ट ना करना ही बेहतर है। Thank you, Mehfooz. So now I request all of you to please turn off your hand raise signs for once. Srijan, Bhargava. Srijan, please turn off your hand raise sign. Srijan, please turn off. Okay. So now I request the participants to only raise their hands when they have counterpoints. Okay, Bhargava, you may go first. थैंक यू मॉडरेटर। सो पहले तो मैं शुभम का पॉइंट काउंटर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पॉइंट में भी बोला था कि मेन रीजन क्या है, मतलब जो आउटर स्पेस कॉलोनाइजेशन का, कि ह्यूमन स्पीसीज को सेव करने के लिए एक्सटिंक्शन से, जो हम लोग का रिनाउंड साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग ने 2 बार बोला कि ये हेल्प करेगा ह्यूमन स्पीसीज को स्प्रेड आउट होने के लिए और खुद को एक्सटिंक्शन से मतलब बचाने के लिए, जो हम लोग का डायनासोर के साथ, जैसे मैंने पहले भी बोला। अगर हम लोग ह्यूमंस को भेजेंगे नहीं उधर में और रोबोट्स को भेजेंगे, तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कंडीशंस कैसा है? रिस्क फैक्टर सब में है। आज कोई भी चीज़ ऐसा दुनिया में नहीं है जो रिस्क के बिना है। सो ऑब्वियस रिस्क उधर भी होगा। मगर जैसे महफूज ने बोला कि कॉस्ट बहुत होगा, मगर अगर एक चीज़ हम लोग ट्राई नहीं करते, अगर आज तक मून, अगर ये सोच के अगर लोग मतलब जो साइंटिस्ट है वो छोड़ देते हैं कि बहुत कॉस्टली होगा, तो ऑब्वियसली आज तक मून शायद कोई भी जा ही नहीं पाता मून तक। तो अगर एक चीज़ हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। सो ऑब्वियसली पहले तो ट्राई करना पड़ेगा। और कॉस्ट कॉस्टली क्यों नहीं होगा, मेरा एक रीज़न है, क्योंकि ये मिशन कोई एक कंट्री अलोन नहीं करेगा। ये पूरा मतलब जो वर्ल्ड है वो एक साथ मिलके करने से ही ये मिशन सक्सेसफुल होगा। सो ऑब्वियसली तो कॉस्टली जो रिसोर्सेज है वो सब ऐसे भी जो मतलब हम लोग का कॉस्ट है वो ऐसे भी कम ही जाएगा, क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड से अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो ऑब्वियसली जो मतलब कॉस्ट है उसका जो मतलब सबका प्रेशर है वो ऐसे भी कम जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता है कि इस रीज़न की वज़ह से हम लोग को नहीं करना चाहिए। और जो मेरा शुभम के लिए जो पॉइंट है, जैसे अगर हम लोग ह्यूमन्स अगर भेजेंगे नहीं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? अगर रोबोट्स जाएँगे तो रोबोट्स का फंक्शनिंग ही अलग है ह्यूमन बॉडी से एकदम। हम लोग अलग है, वो लोग अलग है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है कि रोबोट्स को भेज के हम लोग पता लगा सके कि मतलब कॉलोनाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं उधर। थैंक यू। Thank you, Bhargava. Okay, Shubham, you may give your counterpoint. To choose human over robot for risky experiments in and risky anthropological experiments for long distance deep space for colonization, it itself will be a very big paradigm shift. uh, the idea that we will get extinct because if we don't colonize other planets or other heavenly bodies, that is a uh, very nihilistic thinking, but at least very logical as well. But problem is, if we start to develop, if we start to leave our Earth, our planet, and try to colonize our other planets, for sake of like human colonization, not like a robot colonization or some kind of a proxy thing. You send some message there and then not like that. Like Europeans did in America or elsewhere. So that kind of colonization ये करना है तो इससे ह्यूमन को जो एथिकल प्रॉब्लम होगा ना जो ह्यूमन का, क्योंकि हम लोग को पता नहीं वहाँ का सिचुएशन क्या है। रोबोट को भी नहीं भेजा क्योंकि हम लोग चाहता है कि ह्यूमन को भेजना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल रीजन भी है, जैसे क्योंकि जस्ट मून लैंडिंग हुआ था, मून लैंडिंग का टाइम हुआ था, बहुत सारे लोग स्पेस में जाने का टाइम मार गया। जानवर, कुत्ता, फिर बंदर, वो लोग को स्पेस में लेने गया, वो लोग को ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जी का ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग से अर्थ से लेकर मून जाने में कितने लोग को मार दिया, कितना कितना वो किया, कितने फैमिली तोड़ा। तो एक जेनरेशन तो नहीं, पूरा एक सिविलाइजेशन को तुम दूसरी जगह तुम रिलोकेट कर रहे हो, जब ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ये कभी सोचा है कि इससे कितना बड़ा वो ट्रॉमा होगा? सिर्फ एक जनरेशन के लिए पूरा एक देश के लिए, अगर पूरा अगर मान लो यूएन का स्पेस बना है, ठीक है, यूएन स्पेस, तो तब भी कोई एग्री नहीं करेगा कि कुछ कोई साइंटिस्ट भी एग्री नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वहां पे हम लोग चाह मान ले मून, मून में नहीं, हम लोग मान लो मार्स में अगर लोग कॉलोनी बनना चाहते, ठीक है, बना लिया, मान लो बना लिया, क्या 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 अगर कितना चांस है कि वो बनाने Shubham, के बाद हम लोग एक्सचेंज नहीं होगा? Shubham, please sum up your समझा? point. Okay, so what will be the probability that we will not go extinct if we start to colonize other planets? Okay, thank you, Shubham. So now I request Srijan to please give your counterpoint. जनाब शुभम जी कह रहे थे कि हमारे पास रोबोट्स है, क्यों ह्यूमन बींग्स को भेजना है कि उनके लाइफ को रिस्क होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर हमने, ठीक है, हम पहले एक्सप्लोरेशन के लिए रोबोट्स भेजते हैं, रोबोट्स ने अगर जाकर वहाँ पर हमें यहाँ से मॉनिटर करके उन रोबोट्स को पता चला कि वहाँ पर सब ठीक है कॉलोनाइजेशन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए कोई रिस्क नहीं है। और देखिए एथिकल इश्यूज मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि एथिकल इश्यूज तब आते हैं जब वहाँ कोई अभी तक कोई लाइफ का एविडेंस नहीं है उधर। अगर वहाँ ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ होता तो हाँ राइट्स का इश्यूज आता है। जैसे यूरोप ने यूएस में कॉलोनाइज किया है पहले, वो तभी ह्यूमन राइट्स का इशू आता, लेकिन अभी वहाँ कोई लाइफ का एविडेंस नहीं है। और हाँ, मेरा आपसे वो प्रश्न रहा। Thank you, Srijan. Okay, Shubham, you again have a counter. Please give your counter and please keep it short, please. Thank you. The ethical consideration is not about the other planet or other inhabitants. The ethical consideration is about ourself. We are going to separate families, destroy countries for some resources, for settlement, and that will be that is the ethical problem. And even if it is not that, uh, if it is done so in a peaceful manner, still there will be ethical consideration for people living on Earth, not alien. If there are alien that we are going to trying to conquer,
That is the concern. Thank you, Shubham. Bhargavda, please give your counter. ओके, थैंक यू मॉडरेटर। तो मैं पहले शुभम जो बोला कि एक्सटेंशन से कैसे बचाएंगे अगर हम लोग स्प्रेड आउट हो गए, तो पहली बात आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पकड़ लीजिए आप एक टाउन ए में रहते हैं और मतलब कुछ सिचुएशन की वजह से आप जो लोग टाउन ए में रहते हैं वो लोग स्प्रेड आउट हो गए टाउन एक्स वाई जेड में। अगर टाउन ए में अगर बॉम्ब आके गिरता है, पकड़ लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ बॉम्ब आके गिरता है या फिर कुछ कारण से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो टाउन एक्स वाई जेड के लोग तो ऐसे भी नहीं मरेंगे, वो लोग तो रह जाएंगे ना। तभी वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आर्ट में अगर आज कुछ हो गया, तो जो लोग हम लोग का क्या मॉरल ड्यूटी ये है कि ह्यूमन स्पीसीज को हम लोग सेव करें। आवर एवरी ह्यूमन ड्यूटी इज टू सेव अनदर ह्यूमन। सो ऑब्वियसली हम लोग का मॉरल ड्यूटी यही है। और आपका जो पॉइंट है कि रोबोट को भेजना चाहिए, आपका टीममेट के पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कॉस्टली होगा। कॉस्टली कब होगा? जब रोबोट को भेजेंगे, ह्यूमंस को भेजेंगे तभी कॉस्टली नहीं होगा। रोबोट क्योंकि रोबोट को बनाना पड़ेगा उस हिसाब से, मगर ह्यूमंस को तो बनाना नहीं पड़ेगा, उसको उन लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग में ऑब्वियसली इतना कॉस्टली कॉस्टली नहीं है, मगर रोबोट्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर उन लोग को वो सिस्टम उसमें डालना पड़ेगा, फिर उसमें भेजना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली आपका टीममेट के साथ आपका पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि रोबोट्स को भेजना चाहिए और वो बोल रहे हैं कि कॉस्टली होगा। तो कॉस्टली कौन सा हो रहा है? रोबोट्स हो रहा है। सो यही मेरा पॉइंट है। थैंक यू। Thank you, Bhargav. So, Mahfouz, do you have any counter? No, I'm fine. Okay, Shubham, I'll come back to you, but right now I'd request the EC members and the observers to please raise their hand if they have any questions. Okay, Jyotirmoida, you have raised your hand first, so please answer. Question, give your question, please. ये ऐसा बात नहीं है कि वो মই অসমীয়াত কৈছো কথাটো। Okay, I think they will understand. প্ৰব্লেমটো নিজে নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু সেইটো প্ৰব্লেমৰ সলিউশনো নিজে ওলাই আছে মানুহে। তো কথাটো তেনেকুৱা ন। আৰু প্ৰব্লেমটো কি পৃথিৱীত ধ্বংস হৈ যায় আছে, ধ্বংসটো মানুহে কৰি আছে ন। তাতে আৰু মানুহে আৰু তাৰে 0.5% মানুহৰ সলিউশনৰ কাৰণেতো আমি কাম বেলেগত যোৱাৰ কথা ভাবি আছো। সেইটোতো জাষ্টিফাই নহয় ন। বাকী বাকী 99.5% মানুহ কি হ'ব? Okay, I guess it is for the four people. So, Srijan, you raised your hand first. Please answer. ओके सो एक प्रश्न अभी आया कि क्वेश्चन আহিছে যে অকল 0.5% মানুহৰ কাৰণে আমি এইবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বা স্পেচ কলনাইজেশ্যন যোনটো আছে সেইটো অকল 0.5% মানুহৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। এইটো একচুৱেলি অলমষ্ট এভৰি আৰ্থ যোনে আৰ্থত ৰিচাইড কৰে সিহঁতৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব। বিকজ আৰ্থৰ যোনে ৰিচাইড কৰে ইউজফুল হ'ব নট অনলি চাম যদি তেওঁ স্পেচত নাযায়ো, কাৰণ এতিয়াও ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত আছে কিছুমান বহি আছে। স্পেচত যেতিয়া এক্সপ্ল'ৰেশ্যন হয় আৰু স্পেচত কলনাইজেশ্যন হ'ব, এতিয়াতো এক্সপ্ল'ৰেশ্যনতে আমি কিমান আৰ্থৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ। যেনেকৈ আমি আগতে কিবা ৱেডাৰ হেডবিলাক পাওঁ, ফৰকাষ্টিংবিলাক, সেইটো ডেট ইজ বিকজ অফ জিঅ' ছেটেলাইট যোনবিলাক ওপৰত আছে সেইটো এটা স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ পাৰ্ট হয়। যদি স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনতে ইমান হেল্পফুল হৈ আছে, তো স্পেচ কলনাইজেশ্যন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আৰু হেল্পফুল হ'ব। Thank you, Srijan. Bhargavda, you have a point. য়েছ য়েছ, আই উইল কিপ ইট শ্বৰ্ট। যেনেকৈ জ্যোতিৰ্ময় দাদাই ক'লে কি 0.5 মানুহক খালি খেদাবৰ কাৰণে মানে এইটো নালাগে, বাট 0.5 মানুহৰ কাৰণে নহয়, এইটো আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন। আমি খালি 0.5ত নাথাকে, এইটো 0.5ৰ পৰা বহুত বাঢ়ি যাব। চ' অবভিয়াছলি তো এইটো এনেকুৱা নহয় কি 0.5কে আজি খেদাইছোঁ, আজি 0.5 খেদাইছোঁ, কালি আকৌ 0.5 খেদাম। এইটো এদিনৰ কথা নহয়, এইটো টাইম লাগিব, অবভিয়াছলি টাইম লাগিব। বাট স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কি মানে টাইম লাগে, বাট বস্তুটো হ'ব। চ' আমি এটা বস্তু ভাল যোনটো হৈ আছে সেইটোক বেছি সেই দিব লাগে ন। এতিয়া মানুহ কিমান খেদি আছো, আজি যোনখিনি মানুহ খেদাম সেইখিনি মানুহ যায় তাতে আকৌ বাঢ়িব, কাৰণ পপুলেশ্যন এটা জেগাৰ ছেইম হৈ নাথাকে, অবভিয়াছলি বাঢ়িব। চ' আজি 0.5 কৈছে, কালি বেছি যাব পাৰে। তো সেইটোলৈ মই ভাবোঁ কি এনেকুৱা নহয় কি খালি অলপ মানুহে যাব। এইটো জাষ্ট আমি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন যোনটো হয় সেইটো মেইনলি ছেভ কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো ষ্টেপটো উঠাব লাগে কি বাহিৰত যাই কলনাইজ কৰিব লাগে। থেংক ইউ। Thank you, Bhargav. So, next, আউটাৰ if you are স্পেচত পপুলেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হ'ব নেকি uh, অলপ? Jyotirmoida, I will give you your turn, please. Uh, Bhargav, thank you for your point. Devya, next you raise your hand, so please ask your question.
Thank you, Himanshu. And it is very fresh to listen to Bhargav Dada ka voice again in debate. So welcome back, Bhargav Dada. So my question is actually for both the teams, one for one team and one for the team and one for against team. So actually, it is for the motion. Okay. So the Yeah. the question is that Satya, yes, will you please ask the question to the against team, and I will come back to you against team. later if there is time. Okay, sure. So it is now for the I'll ask question for the against team. Okay, so I Shubham Dada have pehle said that ki, we should save send robot instead of human being. So I feel like like in space exploration, human being conduct more than what the robots can do, whether it be sampling or whether it be justification, whether environment is livable or not, or just human being. So how would you justify that that robot sending robot is better than human being in the space exploration? To Subham actually. Thank you, Divya. So, Shubham, please answer. All the evidence for human research that conducted in the space are done in the International Space Station, and or the furthest we have gone, human gone, was the moon. So the idea that we can go to, let's say, Neptune for study or studying of moon, or for to colonize something for whatever reason, for by sending human, it's very illogical, because we only have uh, gone up to moon for only a only for flags, and for most of the research have done in the International Space Station, which is in the lower Earth orbit, which is not which is like 100 to 200 kilometers from Earth. So how can we compare that to like a million kilometers away, by sending millions of people in millions of kilometers away for research, and if we do not know the geography, geology, environment, the radiation impact, and other things. Thank you, Shubham. So, next, Vivek Dada, will you please ask your question? Thank you, moderator. My question is the for the against team. Uh, I think you all have seen the movie Interstellar, right? There it shows how the Earth is no more habitable and people have to move to a new planet. But it's also shown that due to economic the lack of scarcity of resources, there is just one rocket, and for the other people to move them from the Earth, there needs to be some other calculations. Okay, so keeping these things in mind, and also the fact that, as United Nations Secretary General mentioned, that we are now in a state of global boiling, which is that we are not able to keep our global warming level at below 2%, which was decided by the Paris Agreement. So, in all these circumstances, in all this background, in all this context, don't you think it is high time that we should start investing, we should start researching about how to put our people on other planets other than Earth? And my second just observation, that when we talk about sending human to colonize, I think you people have made a very narrow meaning of it with humans versus robot. So I would like to see you people debate uh, outside that box also. Thank you, Vivek Dada. So, from the against team, who would want to answer, Shubham or Mahfouz? Okay, Shubham, you can answer. So the human versus robot will be the implication for this debate, because it is when, it is important to explore other things, other planets and their information, because knowledge is good. As Spinoza said, or don't quote me that, but to idea that we can go and so what was the question again? I forgot. Yes, I was going to ask Vivek Dada to repeat the question. Please repeat the question since he has not been able to understand it properly. Okay, I am telling that in the movie Interstellar, I hope you have seen Interstellar. It's a movie from Christopher Nolan. Uh,
there it shows that when the earth is no more habitable, people are trying to move to other planet. Okay, I hope you have seen the movie Interstellar. That's my first question. Yeah, I saw it. Okay, Okay, so 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 Mahfouz, would you so like to are we? answer? So let me just finish the Okay, question. okay, So sorry. should we just wait for the time that Earth is not no more habitable and we are then looking for colonization during that period, or should we, in a context where the Earth is uh, the habitable conditions are degrading, in that condition should this be the right time to invest in outer space explorations? For we should not wait for the earth to become inhabited because it is our only home. It is where we evolved from microscopic beings to what we are today and what we will become in like few hundred millions from now. So the idea that we should travel to other planets for colonization is a very novel thing. Uh, but it should not replace the notion that we should wait for the earth to become inhabitable. So we have to focus more on the environment, how to reverse or at least make it more habitable in living in a boiling point of the, as a UN said, in a society marked by climate change and how to survive in that we should study and explore other planets for resources, but colonization and separation because separation of a species because we know if anyone from biology that in a bird it was like a Darwin's finches that was a bird that was in found uh, uh, in Fiji, the island of Fiji, I think. It was for some reason flew to other it had one colony which somehow it got separated and went to geographical border and different and went to a different island after few Please sum up generation your point. hello Please sum up your no point. two birds. Yes, and two birds become so different thanks to evolution that they cannot be interbreeded. They become totally different species. So, the idea that humans should colonize will eventually cause a problem if you consider evolution. Thank you, Shubham. Mahfouz, do you have any points to add? यस आई डू. जैसे कि विवेक दा ने बताया था कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है ऐसा वैसा वगैरह. सो आई डू एग्री दैट कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है अभी. द अर्थ इज बॉइलिंग अप. बट जस्ट बिकॉज कि अर्थ इज बॉइलिंग अप या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे बाहर. प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया है दुनिया में, तो सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना चाहिए. देर आर मेनी इनोवेशंस, देर आर मेनी लाइक प्रैक्टिकल साइंटिफिक इनोवेशन जिस पे अगर हम ध्यान दें तो शायद इसका भी कोई सोल्यूशन आ जाएगा. जरूरी थोड़ी है कि आज छोड़ के ही जाना पड़ेगा बाहर. सोल्यूशन प्रॉब्लम अगर हमने क्रिएट किया तो सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना चाहिए. तो दिस इज जस्ट माई स्मॉल पॉइंट. Thank you, Mahfouz. Defia, you had another question. If no one else has any question, then I will move ahead with your question. Jyotirmoy, I will let you speak, but do you have any question for now? Yes, yes, yes. Okay, Defia, first you will ask your question, then Jyotirmoy, I will ask your question. Okay, is that fine? Okay, okay. Thank you, Himashri, for giving me the chance. So it is actually for the motion, the question. So like Subham and Mehfooz said that the and as we generally know the क्या बोलते the to colonize that space is something we will do after destruction or after art became uh, non-livable. So is there any the risk processes in to colonize other other planet rather than solving the problem of earth, like there might be risks of resources, lack of resources and technology dependency and even long term what to say sustainability issues. So I feel I'm asking question to the for the motion that will there not be any risks regarding the matter to colonize the other planet rather than solving the problem of the earth? Okay, Defia, thank you for your question. I think Srijan raised his hand first, so please answer.
Okay. So much has been said by many members about the risk that will accompany space colonization. Now, I would like to point out that we are not saying bola jao etia colonize koru etia. It will be followed by intense space exploration, research and development first. We will find out the whatever risks are involved. How can humans efficiently live there? কোনোবাই কৈছে যে তাত ৰিপ্ৰডাকশ্যন পচিবল হ'বলৈ নহয়, এতিয়ালৈকে স্পেচত ৰিচাৰ্চ কমপ্লিট হৈ যোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি সেইটো কৈছোঁ যে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব, আৰু যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব তেতিয়া আমি গম পাম যে স্পেচত লাইফটো কেনেকুৱা হ'ব, হিউমেন বিংছ থকা পচিবল হয় নে নহয়, তেতিয়া আমি গম পাম। আৰু নেক্সট আমি কৈছোঁ যে আৰ্থৰ এৰি যোৱা যদি আৰ্থত প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো আৰ্থ এৰি নেক্সট প্লেনেটতে যোৱাটো কিবা ৰিজনেবল হয় নেকি? চ' মই ইয়াত ক'ব বিচাৰোঁ যে আৰ্থটোতো এবাৰ হিউমেন বিংছ আগৰ Srijan, পৰাতো Srijan, I will য়েছ। let you give your counters, but please answer Defia's question. What was Defia's question? Defia's question was that the ethical considerations, like what are the risks involved? So there are many risks that I think that I answered. Defia, can you please repeat your question? Defia, please repeat the question. Okay. Student, I'm saying that there are risks in regarding the colonization of the planets, right? So I'm asking about the risks that might get involved, rather than solving the overpopulation and environmental damage that will be that is causing by the human being. Okay, please answer. That is what I said. There may be risk involved. We are not, ruling that out. Yes, there may be, but for that we need to first focus on research that is really any risk involved, because space research is an ongoing process, and it will require more investments from all the countries, a collaboration also. And regarding that, leaving the Earth is reasonable. I would like to say point out here that even human beings were not in Earth from times since time immemorial. There were evolution from single cell organism to human beings. So if we find any habitable situation in other planets, I do not think there should be any problem in moving towards that planet. Thank you. Okay, thank you, Srijan. Bhargavda, I will give you a chance, but first let me take the question, and I will let only one person answer this time. Jyotirmoyda, please give your question. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग प्रैक्टिकली सोचे तो ग्राउंड रियलिटी में सोचे तो हमारा नियरेस्ट स्टार ही है 4 लाइट ईयर्स दूर। जो हम लाइट से ट्रेवल करेंगे तो 4 साल लगेगा, लाइट स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे तो। और हमारा जो सोलर सिस्टम में हम अर्थ ही है हैबिटेबल जोन, और हैबिटेबल जोन नहीं है। और हम सिर्फ स्पेस में लोगों को भेजने के लिए कितना ट्रेनिंग देना पड़ता है लोगों को ग्राउंड में, और जितना रिसोर्स जाते हैं उसमें, और जो जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उस चीज पे हम इतना पैसा क्यों लगे, इतना रिसोर्स क्यों यूज करें? हमारा अल्टीमेटली हमारा हमारा एनवायरनमेंट ही खराब हो रहा है ना। जो चीज है हमारे पास अभी तक एक ही चीज है, हमारे हमारा पृथ्वी अब एक ही है, उसको हम क्यों बर्बाद करें? Okay, वो वर्ड thank है। you. Okay, thank you for your question. Bhargavda, would you like to answer now? ओके श्योर। जैसे कि ज्योतिमा भैया ने पूछा कि हम लोग क्यों मतलब रिस्क फैक्टर लेके मतलब उधर में जैसे बहुत रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिसोर्सेज ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आज अगर एक सक्सेसफुल होता है तो ये जनरेशन बचा सकता है कि कितना जनरेशन हम लोग का आने वाला है वो लोग को बचा सकता है। और आर्ट में रह के भी अभी भी आर्ट हम लोग रिस्क में ही है, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ हो सकता है तो पूरा एक्सटेंशन मतलब ह्यूमन रेसिस का मतलब रेस का ही पूरा एक्सटेंशन हो सकता है। तो उससे अच्छा है तो हम लोग उधर मतलब जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो करें, क्योंकि और ज्योतिर्मय भैया ने पूछा कि मतलब जो लाइट ईयर्स में है वही 4 साल है, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग कुछ प्लेनेट में जाके हम लोग बसे। हम लोग जो स्पेस स्टेशन है वो भी कंस्ट्रक्ट करके उधर में इनहेबिटेट कर सकते हैं, कि वो भी एक कॉलोनाइजेशन का ही फॉर्म है। उधर में अगर सिक्स अभी आई थिंक सिक्स एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं उधर में। सो ऑब्वियसली ऐसे करके करके हम लोग का एक जो कॉलोनी है वो भी बना सकते हैं। और अभी अगर कुछ एक हम लोग चीज़ नहीं करेंगे तो उसके बारे में हम लोग को पता कैसे चलेगा? अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना, हम लोग ऐसे बैठ के रह जाएंगे तो।
अगर आज मून में अगर नहीं गया होता तो हम लोग आज तक तो यही सोच रहे थे कि मून में भी नहीं जा सकते। तो वो लोग गए नहीं, रिस्क फैक्टर लेके गए। तो अगर रिस्क फैक्टर लेके नहीं गए होते तो आज हम लोग इधर में ही सोचते रहते कि अच्छा मून में भी शायद रिस्क है तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो यही मेरा आंसर है। थैंक यू। Thank you, Bhargav. So next, Vivekda, please ask your question. थैंक यू मॉडरेटर। मेरा क्वेश्चन था, इट्स फॉर द अगेंस्ट टीम। सॉरी अगेंस्ट टीम, आई एम रियली एनोइंग, आई नो। यू पीपल आर सेइंग कि क्योंकि अर्थ डैमेज हम ही लोग कर रहे हैं, तो हम ही लोग इसको सुधारे। Look, when the sun will explode one day, okay? It's called the great explosion, something in scientific term I don't really remember. The sun will explode someday. It is around some billion years after. So don't you think human species should have that time to decide its fate? And as long as the nearest star system, which is the Proxima Centauri, which is 4 light years away, don't you think we should send research vessels, research astronauts in that direction? Because we know we have already Voyager 1 and Voyager 2 in the interstellar space. So I don't I really want to know from you people ki is it really worth it कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस कॉलोनाइजेशन में अभी इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि स्पेस मिशंस दे टेक अ लॉन्ग टाइम. Thank you, Vivekda. Okay, Shubham or Mahfuz? Okay, Mahfuz, please answer. ओके, एज विवेक दा सेड कि अर्थ एक्सप्लोड होगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अर्थ सॉरी सन एक्सप्लोड होगा, तो अगर सन एक्सप्लोड होगा तो क्या सन के साथ सिर्फ अर्थ ही एक्सप्लोड होगा? बाहर में अगर जैसे बताया गया कि अगर हम बाहर में कॉलोनाइज करेंगे तो वो भी तो सन के एक्सप्लोशन से इफेक्ट होगा ना, तो अल्टीमेटली तो वो भी तो डैमेज ही हो रहा है, राइट? I am talking about being in the interstellar space, not just in the solar system. Okay, so Shubham, you can answer. The idea that we are talking about space colonization, interstellar space is a very long short kind of idea. We have not even colonized Mars, let alone Moon. We each country, China is making their own space station. India is planning to make its own space station in 2030, I think, and ISS is uh, going to get dysfunction or something like that soon. The idea, or the space exploration thing, or the human space exploration at least, will 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 have so far has been in the lower Earth orbit. And to consider even like going beyond solar system itself is a very long shot idea. That's my. Thank you, Shubham. Okay, now I would like the members to please, the debate speakers that is, to please get ready with your concluding points. Bhargav da, please give your concluding points. थैंक यू मॉडरेटर। सो लास्ट में यही बोलना चाहता चाहता हूँ कि लाइक जैसे अगेंस्ट बार बार बोल रहे हैं कि वी हैव नॉट वी, मतलब आज तक हम लोग एक्सप्लोर वो इसलिए तो एक्सप्लोर करना है कि आज तक नहीं किया। अगर आज तक अगर हम लोग करेंगे नहीं तो बाद में भी कभी भी होगा ही नहीं। तो इसलिए तो मतलब आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि आज तक हम लोग ने किया ही नहीं तो कैसे हो सकता है। तो इसलिए तो करना है ना, क्योंकि हम लोग को तभी तो पता चलेगा कि इनहेबिटेबल है कि नहीं है। हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है या फिर ह्यूमन स्पीसीज है वो उधर में सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। और सेकेंडली, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था स्टीफन हॉकिंग, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट, अगर मैं नहीं बोलूँगा मतलब बोलूँगा तो तभी भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने बार-बार बोला है कि जो स्प्रेड आउट अगर होगा तभी हम लोग बच सकते हैं, ना कि आर्ट में रह के आर्ट में कॉन्सेंट्रेट होके, क्योंकि आर्ट में पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि थोड़े दिन के बाद शायद जो हम लोग के फॉरेस्ट एरिया है वो भी बचेंगे नहीं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग आउटर स्पेस में जाके खुद को मतलब ऐसा बनाए कि हम लोग उसमें भी सर्वाइव कर सके। अगर मतलब आर्ट में कुछ हुआ तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ स्पेस में हम लोग को सिर्फ सोलर सिस्टम में ही रहना है। मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है, तो उधर में हम लोग का गैलेक्सी आज तक एक्सप्लोर नहीं हो, तो उधर में जाके पहले तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि सर्वाइवल मतलब हो सकता है कि नहीं। इसलिए मतलब मेरा पॉइंट यही है कि हाँ, ह्यूमंस को मतलब कॉलोनाइज करना चाहिए, तभी ह्यूमन रेसिस का मतलब सर्वाइवल का मतलब चांसेस बढ़ेगा फ्यूचर में। वही, थैंक यू। Thank you, Bhargav. Next, I would like Shubham to please give your concluding points. So I would like to conclude this in my part that
We have not explored any further distance. So there is no precedence left for us to consider colonizing deep space or interstellar space or even in our Milky Way galaxy. Uh, uh, and we have our own shot. We have a problem in our society, our art. So we should solve those problems first. Then we consider if you want to can propagate elsewhere. That's what I would say. Thank you, Shubham. Now I request Srijan to please give your concluding remarks. Okay, so I would like to conclude. Thank you, moderator. I would like to conclude by summarizing all the points that I mentioned today. So, space exploration is necessary. Firstly, because it will promote universal brotherhood, I believe, because when space colonization will occur, countries from the citizens from all the country will be going there, and we should not confine our confine this thought. हमको बस इतना नहीं सोचना colonization मतलब सिर्फ humans वहाँ जाकर रहेंगे नहीं. स्पेस में हम कुछ भी करें विश्व कल्याण के लिए वो स्पेस colonization ही माना जाएगा. और रही बात रिस्क की, अगर विश्व कल्याण की बात हो तो हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए. लाइक विवेक दास सेड, वी नीड टू थिंक इवन अबाउट द इंटरस्टेलर स्पेस रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर ओन सोलर सिस्टम. एंड बहुत ने कहा कि हम इतना सारा रिसोर्सेज क्यों बर्बाद करें, कन्वेंशनल एनर्जी का बात. लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉसिल फ्यूल्स रॉकेट या कुछ स्पेस मिशंस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता. हम आजकल लिक्विड हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें अर्थ का ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो ये भी प्रश्न उठता नहीं है. तो इसलिए मुझे लगता है कि, और एक तो मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आएगी स्टेम ब्रांचेस से. और ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा मजाक की बात है कि हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी एक मौका है, एक रिसर्च पेपर, द टॉपिक विल बी प्रॉपर्टी लॉज एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑन मून एंड आउटर स्पेस, अ लीगल एनालिसिस. तो सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. तो इसलिए मैं इसी के साथ अपना स्पीच, अपना मतलब पॉइंट्स कंक्लूड करना चाहूँगा. थैंक यू. Thank you, Srijan. So next I request Mehfooz to please give your concluding remarks. Okay, thank you. In my conclusion, to sum up very shortly, I will say like investing in space colonization as a solution for the Earth's problem. I see that it is an like kind of escapism or deflecting the attention from the root causes of the global challenges. And to be honest, I feel that instead of seeking refuge in space, it's better that if we should focus on addressing the inequality, injustice, or the environmental degradation in our own home planet. We should stay rooted. That's all I will say. Thank you. Thank you, Mehfooz. So now I request the EC members to give their opinions about the debate. I will start with Vivekda. Thank you, moderator. I think the debate was a superb debate. Both the sides had given their best arguments, and I'm very much convinced by both of them. And this gave me a view which is very neutral, in my opinion. But obviously, we should be a little bit more optimistic. Without thinking about colonizing, it's more like a pessimist view. So I would also urge all of you to have a very optimistic view about the human species as a whole, and also maybe we will someday be in another star solar system. Thank you, Vivekda. So now I request Defia to please give your remarks. Thank you, moderator. So actually, today's topic debate was actually very nice. I get to hear many views of opinion and many viewpoint and what can be, what can be done if we have colonized or what cannot be done. What is the risk? So it was a very nice topic as well. So I think it was a very nice debate. So I will, for me though, I feel like colonizing is not a good choice in my case. So, but it is okay. I won't be giving my opinion. So, yeah. Thank you, Defia. Next, Lashmita, will you please give your remarks on this debate? Thank you, moderator. It was really nice to hear all of you, all the different opinions, the different sources of knowledge, and everything. It was really fascinating to hear all your points. And I really had a nice experience because obviously this is something I really had not that much of in depth knowledge. So I really enjoyed it.
Well done, each and all the participants. Great work. Thank you, Lashmita. Next, I would request the observers to give their remarks. So, Jyotirmoida, will you start? Jyotirmoida, are you there? Yes, Yes. मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ जो हम जब प्रैक्टिकली सोचे तो इम्पॉसिबल है इंसान ऐसे नहीं जा सकते हैं अब तक मतलब कि जब आज तक का जितना नॉलेज है ह्यूमन के पास उससे तो इम्पॉसिबल है जो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होने से क्या होगा रिसोर्स जाएगा और रिसोर्स तो आर्ट का ही यूज हो रहा है रिसोर्स वेस्ट और पोल्यूशन बढ़ेगा वही है उससे ज़्यादा हम लोग फोकस करें आर्ट को कैसे बचाए आर्ट को कैसे और हैबिटेबल बनाए मतलब मतलब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ पर टिके उसमें हम फोकस करना चाहिए Thank you, Jyotirmoida. Next, Pranjalta, would you please give your remarks? Pranjalta, are you there? I guess he's not here. So, Ashish, are you here? Yes, yes. Please give your remarks. Good afternoon, everyone. Yeah, thank you, moderator. Uh, I would like to say that I also don't have much knowledge about this topic. After I hear you all, got some valuable information though, and I just came up with one thing that everyone have maybe or may not have watched this movie Emo. So something like that could also happen. So that's it. Thank you. Thank you, Ashishta. So that is the end to our debate session today. And in conclusion, I'd like to say that I was really pleased with the debate session and that I'm happy that one session that I moderated didn't go with Kalesh and that this session was very informative and we got to hear different point of views. And as the moderator, I won't give my opinion and I gave the topic, so it was it was really good to hear people actually debating on this topic. So thank you for taking part and good night. Good night. Good night. Tata.